Now student, these questions we have done, page number 118, this all we have done second, and these all. This was based on inertia and first law of motion. Next is page number 126. If action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. This also I have explained you in my previous video. Next question is, explain why it is difficult for a fireman to hold a hose. Hose means a thick pipe that ejects large amount of water at a high velocity. जब भी कहीं फायर आउटब्रेक होती है तो फायरमैन एक मोटी सी थिक पाइप लेकर आता है जिसमें प्रेशर से पानी भेजते हैं हम, ताकि फायर को हम एक्सटिंग्विश कर सकें. तो वो फायरमैन उस पाइप को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड करके रखता है. तो उसने यही पूछा है कि वो उसको होल्ड करना डिफ़िकल्ट क्यों है, उसको इतनी स्ट्रांगली क्यों होल्ड करके रखता है. दिस इज स्टूडेंट्स एक्चुअली ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ motion, which is action and reaction law. Water keeps on coming out of the pipe at a very high speed, and due to that high speed, water at the same time exerts a backward force on the pipe. So pipes keep on pushing itself in the backward direction. That's why it becomes difficult for the fireman to hold that pipe, because water is pushing itself in forward direction, whereas the pipe keeps on pushing itself in backward direction. वो उसको hold करता जाता है, वो पीछे खिसकती जाती है pipe. So that is why. Next is a numerical. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram. So there are two objects, a bullet and a rifle. So this we have done, this we have discussed ki how this type of question is to be done. I am going to explain this, but let us read this question first. From a rifle of 4 kg mass, obviously rifle heavy है, उसका mass 4 kg है, and bullet is lighter of just 50 gram, is fired with an initial velocity 35 meter per second. That initial velocity is given for bullet, not for rifle. Calculate the initial recoil velocity. Recoil velocity I have already told you कि if bullet is fired then gun will recoils back, वो पीछे की तरफ जाती है, and we have to calculate that velocity. So let us do this numerical. Now see the solution. Mass of rifle is given to be 4, mass of bullet m2, because there are two bodies, given to be 50 gram. Obviously gram is to be converted into kilogram by dividing by 1000. Recoil velocity of rifle is v1, let us assume that, and bullet is fired with initial velocity of 35 meter per second. Now consider that rifle is at rest, so its initial velocity will be 0. The initial momentum of the rifle and bullet system. अब इनिशियली क्या है कि दोनों ही रेस्ट पर हैं. यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की जो फायर करी है वो इनिशियल नहीं ले सकते हम उसको, वो फायर करने के बाद की वेलोसिटी है. इनिशियली दोनों ही रेस्ट पर थे, बुलेट जो थी वो गन के अंदर थी, एंड बोथ वर एट रेस्ट. सो द टोटल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज v and m1 plus m2 equals to 0. Here we have used third wala case in which we have discussed about combined masses. Next, the total momentum of the rifle and bullet system after firing. So here what we have used, in that equation that I have discussed in previous video, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v. Instead of v, in that case we had u, इनिशियल वेलोसिटीज़ थी हमारे पास. यहाँ पर हमने v1 और v2 ले लिया क्योंकि हमारे पास फायरिंग के बाद की हमने बात करनी है, फाइनल वेलोसिटीज़ की बात करनी है. इनिशियली दोनों ही किस पे थे, रेस्ट पे थे. तो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ m1 v1 m2 v2 we have to, v2 is provided to us, but v1 we have to find out. So v1 is question mark. So you just keep on putting the values, and this is what we have obtained. Now according to second law of conservation of momentum, total momentum becomes equal to final momentum. So this is how, because final momentum is 0, because initially rifle and bullet both having a velocity 0. तो ये जो पार्ट था, इन दोनों को आपने इक्वेट करना है for momentum conservation law. m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 plus m2 into v, and this is 0, this part is 0. This is 0, so this whole comes out to be 0, and here we can find the velocity for v1. Now
in this part you can see कि velocity is coming out to be negative. Why this negative? Because bullet and gun are moving in a direction opposite to each other. So this is recoil velocity. That is why negative sign is taken. Otherwise you can read it from this also. Now see fourth question on page number 127. This is two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line with velocities 2 and 1 meter per second. Masses given है आपको, initial velocities given है आपको. How did I say कि these are initial velocities? Because I have read the question, this line I have read that they collide and after the collision means whatever is being given to you before this line they collide. So that is initially, that is happening initially to the body, and after collision the velocity of one of the objects is 1.67 and determine the velocity of second object. So this is the simple kind of momentum conservation application type of numerical. So let us see the data given to us. Data is m1 equals to 0.1 kilogram. Now see main exercise, page number 128, question number 1. An object experiences a net zero external unbalanced force. Means unbalanced force is zero. That means force acting on the body is balanced. Unbalanced force नहीं लग रहा body के ऊपर, but कैसा force लग रहा है? Balanced force लग रहा है. Now is it possible for an object to be traveling with some non-zero velocity? कि ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है फिर भी वो मूव कर रहा है विद नॉन ज़ीरो velocity. See what we have done in our first first video, कि we have done that balanced forces do not change the state of an object. They just help the body to maintain its state. वो स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में नहीं ला सकता. वो सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा. पर बैलेंस्ड फोर्स ये कर सकता है कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में उसको मेंटेन रहने दे. तो एक उसमें हमने यही किया था फर्स्ट लॉ में भी कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस यू गिव एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, नहीं लग रहा तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. या तो वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, बट उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता. दैट विल रिमेन कांस्टेंट. सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ, दैट वाज द मेन explanation part for this question. Now next question is, when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Why does this happen? This is actually because of first law of motion or law of inertia. Because initially carpet and stick, these both items are at rest, but when carpet is beaten then carpet comes into motion. But at the same time dust particle, they also have to come into motion, but being lighter in weight as compared to carpet, they easily change their state due to lesser amount of inertia, and they feel a jerk due to the stick, and thereby due to that jerk they get detached from this carpet. So this is how the first law of inertia is responsible for the separation of dust particles from the stick. Next question is, why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? That we have already done in do patch questions. Why do passengers fall forward or backward when brakes are applied or engine suddenly starts and all that. So this is all because of inertias of motion, direction as well as rest. जब वो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा और उसको एक अलग टाइप का झटका लगेगा. अगर वो किसी डायरेक्शन में टर्न ले रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड इमीडिएटली द व्हीकल टेंड्स टू टर्न, इमीडिएटली वो टर्न लेता है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दैट luggage or that bus do not want to actually change its state of direction, but
it has to change its direction. So what the luggage will feel a kind of jerk, and due to that jerk the luggage may fall off the bus. So it has to be tied with a rope. Or third case is inertia of motion. When bus is already in motion, luggage is also in motion, but as soon as the brakes are applied, then bus, luggage, everything comes to rest, but luggage takes some time to come to rest, and because it is forced to come to rest, उसको रेस्ट पर लाया गया है ज़बरदस्ती, तो उससे क्या होगा, it will again feel a jerk, and due to that jerk it may fall off from the bus. So it is necessary to tie that. Next is question number 4. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. See this, प्लेन ग्राउंड के ऊपर रोल हो जाती है. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉल चलते चलते रुक गई. तो बॉल स्लोज टू अ स्टॉप, धीरे धीरे कम होते हुए रुक क्यों गई? तो सिंपली यहाँ पर क्या है कि देयर इज़ अ फोर्स ऑपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉल, कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है, इसीलिए बॉल रुक जाती है कुछ टाइम के बाद. Next is a truck starts from rest. Starts from rest means initial velocity given to you is 0. Next, rolls down with a hill with a constant acceleration, and it travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Acceleration is constant, distance traveled given to you is 400 meter, and time given to you is 20. Find its acceleration. Obviously for acceleration we need to use some equation of motion. So here, because distance was given, u was given initially at rest, and time is given, so simply we can use this second equation of motion. So by using second equation of motion, we have calculated A by putting all these values in it. So that comes out to be 2 meter per second square. Here it is written as 2 ms minus 2. Obviously that is 2 meter per second square that I have told you many times. Next part is calculate the force. Now force is what? Force is mass into acceleration. Force is mass into acceleration. So acceleration right now we have calculated. So that acceleration is to be multiplied with mass so as to get the force. तो मास हमें कितना प्रोवाइडेड है? मास इज 7 मीट्रिक टन्स, एंड 1 मीट्रिक टन इज 1000 kilograms. So 7 metric tons will become 7000 kilograms, and 7000 into 2, that will come out to be 14. Now let's do 6th question. Let us read this question. A stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake, and it comes to rest. So finally the body is coming to rest. That means that velocity which is given to us in the question is initial velocity, and comes to rest means v equals to 0. That we have done in 8th chapter also. And when did it come to rest? After traveling a distance of 50 meter. मतलब एक लेक के ऊपर फ्रोजन सरफेस था, वो फ्रीज हुई लेक थी, तो आइस ने उसको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड किया, या प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड किया, तो वो बॉडी रुक गई आकर, और रुकने से पहले उसने 50 मीटर ट्रेवल कर लिया था डिस्टेंस. तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस? सो सी दिस सॉल्यूशन. Mass is given to us, u equals to 20, v equals to 0. Acceleration we have to find. Why acceleration is need to be calculated? Because for the calculation of force we need mass as well as acceleration. Mass is given to us, acceleration we have to find. So u, v, s, these are the things, these are the values which are given to us. So by these three values, what we can do? We have to apply equation of motion. Now students, in this chapter number 9 we are going to use chapter 8 and its equation of motion. Even not in this chapter, in all the chapters you are going to read ahead in your science book, we are going to use all these equation of motion. So do remember that, don't forget that. So next is you keep on putting the values, and we have got a equals to minus 4 meter per second square. Why this negative sign is coming up? Because the body is brought to rest by the frozen lake, so that is why negative sign is appearing. Don't get confused for this negative sign, ki why this negative sign is appearing, we have done something wrong or like that. So forget about that. Now put this value of minus 4 into the formula for force so as to get the value of force. Again
train you are seeing, you can see that negative sign is also appearing in force also, because force applied by the lake is frictional force and it is always opposite in the direction of motion. So that is why negative sign is coming up. Next is question number 7th. A 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate all these things. So what is the situation here? Like, just a minute. This is engine and wagon system. Engine is having 5 compartments of train attached to it. Mass of engine given to you is 8,000 kilograms and mass of each wagon given to you is 2,000 kilograms. So mass of 5 wagons will be 2,000 into 5, that is 10,000 kilogram, and mass of whole train, complete train, is mass of engine plus mass of these 5 wagons. So that will come up to be 10,000 plus 8,000 मीन्स 18,000 टोटल मास हो गया इंजन और 5 वैगन्स का मिलाकर. तो ये आपका टोटल मास हो गया ट्रेन का. अब उसने बोला है आगे कि अप्लाइड फोर्स. सपोज ट्रेन इज़ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन दिस ट्रैक, दिस इज़ द ट्रैक. On this track, train is moving in forward direction and this track is offering a frictional force in opposite direction to this train. So calculate net force. The applied force is 40,000 Newton and the frictional force is 5,000 Newton. So frictional force is always opposite to the applied force. So we have to put negative sign. Means it is in opposite direction. Now to calculate the net force, we have to subtract the value of frictional force. Now you can see 40,000 minus 5,000. Frictional force and applied forces are to be subtracted from each other, and net force applied, with which the train can move forward by overcoming the frictional force. Next part is and the acceleration of the train. कंप्लीट ट्रेन की आपको एक्सेलरेशन बतानी है. तो फोर्स हम यहाँ पर निकाल चुके हैं. एक्सेलरेशन के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, F इक्वल्स टू m इंटू ए. फोर्स है, मास हमने कैलकुलेट कर लिया पूरी ट्रेन का 10,000 प्लस 8,000. किसी बुक में आपको कुछ और मास भी लिया हुआ दिखेगा, खाली वैगन्स का लिया हुआ दिखेगा या खाली इंजन का लिया हुआ दिखेगा, पर हम कंप्लीट ट्रेन का ले रहे हैं क्योंकि वो पूरी ट्रेन ही कंट्रीब्यूट कर रही है मोशन के लिए. तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो 35,000 बाई 18,000, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this was the second part. Next is the force of wagon 1 on wagon 2. How much force this first wagon is applying on second wagon. Now after this second wagon we have 3 more wagons attached. So second जो फर्स्ट वाला जो सेकेंड वैगन के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको इन सब के ऊपर भी एक तरह से इनडायरेक्टली फोर्स लगाना पड़ रहा है, बिकॉज दीज आर अटैच टू इट. अगर ये नहीं होंगे, ये 3 वैगन्स नहीं हैं, तो सिर्फ फर्स्ट का सेकेंड पे कैलकुलेट किया जाएगा. अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट का थर्ड पर कितना फोर्स लग रहा है तो उसको 2 वैगन्स और को भी कंसिडर करना पड़ेगा. So this is the way how I have calculated the next part's problem. M equals to 4 into 2,000 because second's wagon mass has to be taken into consideration along with third, fourth and fifth. So in all we have these 4 wagons and total mass of these 4 wagons will be 8,000. Acceleration we have already calculated and force equal to M into A. Remember this thing that this is not the total force applied by the train on the track. This is the force that first wagon is applying on the second wagon. So it must be different from this 35,000. So it comes out to be this much. Next is question number 8. An automobile vehicle has a mass of 1500 kilogram. What must be the force between the vehicle and the road if vehicle is to be stopped with negative acceleration 1.7. Why he has used negative sign? Because the vehicle is brought to rest, and we say that and we remember that कि for
the body is bringing to rest, when a body is brought to rest, then v always comes to be 0, and due to the value of v to be 0, acceleration will come out to be negative. So ma equals to negative. By simply multiplying m and a, you can calculate the value of force, and that too will come out to be negative because body is being stopped. And why it has been stopped? Because frictional force is overpowering the applied force. Next question is, this is a conceptual problem, question number 10th. Using a horizontal force matlab if a pen is lying here, then this pen is about, then we are trying this pen to move horizontally. ऐसे move करा रहे हैं हम इसको horizontally, either in this way or in this way. तो force is applying horizontally. अगर vertical होता तो I am trying to move this pen inside this book, or trying to lift up this pen outside the book. So horizontal force is along the plane of the paper or along the plane of the surface. We intend to move a wooden cabinet is like almirah, across the floor at a constant velocity. This constant velocity plays an important role in this question. The whole question revolves around this alone. What is the frictional force that has to be exerted on the cabinet? Frictional force means if you are applying this force, then what will be the force from other side? Means if you are trying to move this pen in this direction, then what will be the force that you apply from this direction? उल्टी डायरेक्शन में आप कितना फोर्स अप्लाई करोगे? सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम. लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन. Constant velocity is to be maintained, and we know that according to first law of motion, a body will maintain its motion. Uniform motion मतलब constant velocity maintain करती रहेगी जब तक उसके ऊपर balanced forces लग रहे हैं. Recall first law statement. The answer lies in first law's statement itself. तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करनी है, मतलब आपको फोर्सेस कैसे बनाने हैं? बैलेंस्ड बनाने हैं. और अगर आप यहाँ से 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस साइड यू हैव टू अप्लाई 200 न्यूटन ऑफ फोर्स सो एज टू मेक दीज टू फोर्सेस बैलेंस्ड. तो यही एक मेन कॉन्सेप्ट था. तो अप्लाइड फोर्सेस 200 न्यूटन, ऑब्वियसली फ्रॉम अदर डायरेक्शन, सो यू कैन कीप नेगेटिव साइन विद दैट. नेक्स्ट इज MCQ type question. What is the formula of momentum? Obviously it's m into v. Next is, sorry, I skipped that question. Question number 11th. Two objects each of mass 1.5 kilogram are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision. पहले u1 और u2 गिवन है आपको, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर. आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपन्स? दे स्टिक टुगेदर. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर collision? So let us analyze this situation. Masses are given to us. These are same for both the bodies, 1.5 kilogram. Say one body is moving in this direction, then it is mentioned that they are moving with same velocity. Velocity is same before collision but in opposite direction. So as to show the opposite direction motion, we have to put negative sign for any one of the objects. तो अगर ये यहाँ मूव कर रहा है तो ये यहाँ मूव कर रहा है, मतलब आमने सामने मूव कर रहे हैं. अगर सेम डायरेक्शन में लिखा होता तो दोनों ऐसे मूव कर रहे होते या दोनों ऐसे मूव कर रहे होते. तो वर्ड्स यहाँ पर गेम प्ले कर रहे हैं. यू हैव टू कीच ईच एंड एवरी डाटा इन योर माइंड एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्ले द गेम विद न्यूमेरिकल. सो नाउ यू हैव, हाँ, कोलिजन के बाद क्या हुआ? द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर मीन्स फेस टू फेस बॉडीज़ थी, तो हेड ऑन कोलिजन हुआ. हेड ऑन मतलब बिल्कुल फेस टू फेस कोलिजन हुआ, एंड ड्यूरिंग दैट कोलिजन बॉडीज स्टिक टुगेदर. जैसे मैंने आपको एक वो कंटेनर और एक बॉल वाला एग्जांपल बताया था कि एक कंटेनर रखा हुआ है और बॉल बहुत स्पीड से आती है और इसी कंटेनर के अंदर मूव कर जाती है. नाउ दीज टू आर मूविंग ऑफ टुगेदर. So this is the problem for combined mass. So m1 m2 into u, this equation has to be used. This is the third case of conservation of momentum that I have discussed. So by putting all these values, you will get v equals to 0 meter per second. Now let us see the calculation part. Do not try to solve these things, because put insight into the question. दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों चीज़ें सेम है, न्यूमेरिकल डाटा सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे ये क्या आ गया? 0.
इज इक्वल टू मास इज m1 प्लस m2 इंटू वी, ये 3.0 इंटू वी आ गया और वी की वैल्यू क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th. Now look at question number 12th. Though this statement is quite long, 4-5 lines, 6-line question is this, but don't get frightened with this. This is a very simple time kind of question. So let us read this question. According to third law of motion, we push an object, the object pushes us back with an equal and opposite force. This is the third law, means F12 is equal to minus F12 mathematically. Now इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अ मैसिव ट्रक, बहुत भारी ट्रक है अगर, जिसको रोड साइड के अलॉन्ग हमने रखा हुआ है, पार्क किया हुआ है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव. ऑब्वियसली इट विल नॉट मूव. अ स्टूडेंट जस्टिफाइड दिस बाय आंसरिंग दैट टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज कैंसिल आउट ईच अदर. एक स्टूडेंट उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन देता है कि क्योंकि उस ट्रक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसीलिए वो ट्रक जो होता है वो मूव नहीं करता. नाउ यू हैव टू कमेंट ऑन हिज लॉजिक. उसके लॉजिक के ऊपर आपने कमेंट करना है और आपको अपनी जस्टिफिकेशन से बताना है कि वाई दिस ट्रक इज़ नॉट एट ऑल मूविंग. सो लेट अस सी द सिचुएशन, लेट अस एनालाइज द सिचुएशन. सी दिस वॉज द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन कि यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन सम बॉडी एंड द बॉडी इज अप्लाइंग द सेम फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन और यू ऑल्सो. नाउ लेट अस सी द सिचुएशन फॉर ट्रक. This is a truck, though it doesn't seem to be a truck. My drawing is very poor, I have told you number of times too, so ignore, but assume that this is a truck and you are applying some force on this truck. At the same time, truck is applying some force on you and that force is equal to the force you have applied. Means अगर आप 1-2 force apply कर रहे हो तो ट्रक आपके ऊपर 2-1 force apply कर रहा है नेगेटिव साइन के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब बच्चा क्या कह रहा है, स्टूडेंट कह रहा है कि फोर्सेस ऐसे नहीं लग रहे. फोर्सेस कैसे लग रहे हैं कि ये ट्रक है, एक यहाँ से फोर्स लग रहा है और एक यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और वो बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए ट्रक मूव नहीं करता. बट सिचुएशन इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दिस. सिचुएशन ये है, तो ट्रक क्यों नहीं मूव कर रहा, फिर भी क्यों नहीं मूव कर रहा? ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ इनर्शिया. ऑब्वियसली इट हैज़ बीन टोल्ड इन क्वेश्चन इटसेल्फ कि ट्रक इज़ वेरी मैसिव, बहुत भारी है ट्रक, तभी वो मूव नहीं कर रहा. तो जितना भारी होगा ऑब्जेक्ट, इट्स इनर्शिया विल बी मोर. एंड फॉर हेवी इनर्शियल बॉडीज़ जिनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू चेंज देयर स्टेट. सो दैट इज़ वाई दिस ट्रक इज़ नॉट एट ऑल मूविंग. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13th. Question number 13 says that a hockey ball of mass 200 gram is traveling at a speed of 10 meter per second and is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity 5 meter per second. Read each and every line carefully because data is mathematical data. Along with mathematical data, signs are also being told in the question itself, so you have to read. Now let us analyze these 3 lines. Mass is 200 grams, so it has to be converted into kilograms. Already traveling with 10 meter per second, so this is u, and is struck by a hockey stick. Another object comes to the ball to hit it, and during that collision with ball and hockey, the ball returns back. वापस अपने पाथ पे चली गई और उसकी वेलोसिटी भी 10 की बजाय कितनी हो गई, कम हो गई, 5 हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई. और रिटर्न बैक अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मीन्स mv और mu का चेंज निकालना है आपने, एंड ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. hockey stick and ball, mass is converted, u equals to 10, v equals to -5. why -5? क्योंकि बॉल यहाँ जा रही थी, हॉकी से टकराने के बाद वापस उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई. नेक्स्ट इज डेल्टा पी. डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम. यू हैव टू फाइंड mv is given, mu is given. now v is with negative sign क्योंकि डायरेक्शन अलग है. इट डजेंट मैटर वेदर यू गिव इट एज अ नेगेटिव साइन और यू पुट अ नेगेटिव साइन फॉर दिस, इट हार्डली मैटर्स, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने v को नेगेटिव साइन दे दिया और ये आपका सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. Students, you notice each and every time I am taking out an answer, I am putting it in a block. This highlights your solution, highlights your answer. So do that. Next is question number 14.
a bullet of mass 10 gram, obviously this again has to be converted into kilograms with a velocity of 150 meter per second. इतनी स्पीड से वो ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है. इट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. शूट किया हमने उस बुलेट को किसी वुडन ब्लॉक में जो कि स्टेशनरी है. एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की ये हो गई. एंड कम्स टू रेस्ट मीन्स बुलेट फाइनली रेस्ट पर आ गई, तो वी कितना हो गया 0. एंड इन हाउ मच टाइम डज इट टेक प्लेस? ओनली इन 0.03 सेकेंड. नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक. वो बुलेट उस ब्लॉक के अंदर कितना आगे तक पेनिट्रेट कर गई, अंदर घुस गई. एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted. फोर्स निकालना है और डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है. नाउ इन दिस चैप्टर अगेन फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग m into a or m into v minus u by t. Any of the formula, these are same, but distance is not being told in this chapter. So for distance we are again going to use equation of motion, our savior. हमारा soldier, हमारा savior ये equation of motion ही है हर question में. Now see this, mass of bullet, initial speed of bullet, final speed of bullet, time during the shoot, distance we have to calculate. So first of all I am using the simple first equation v minus u equal to 80 because ultimately force भी निकालना है हमें. तो force कब निकलेगा? जब हमारे पास acceleration आएगी. तो यहाँ से मैंने acceleration निकाल लिया माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप ये देखो ना कैसे इतनी ज़्यादा आ गई कि 150 मीटर पर सेकेंड से एकदम ही बॉडी 0 पर आ गई है. और कितने टाइम में? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, बहुत कम टाइम में. तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन आपकी हाई आ रही है. नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स एंड यू गेट फोर्स. नेगेटिव साइन क्यों? बिकॉज बुलेट इज बीइंग स्टॉप्ड बाय द ब्लॉक. नाउ एस इज टू बी कैलकुलेटेड. For s you have to use ut plus half at square or v square minus u square equals to 2as. Any of these two equations can be used. This you have to solve of your own. Next is question number 15th. Question number 15 is an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity 5 to 8. This is quite simple question in 6 seconds. Mass is given, initial velocity is given, final velocity is given, and in how much time the velocity is going to change? Only in 6 seconds. Calculate initial and final momentum. For initial momentum what you have to do? mu you have to find. For final mv. U is what? U is 5, v is 8. And the magnitude of force. Force के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है और डिवाइड बाय t करना है. तो ये मुझे कैसे पता चला फोर्स का? By using second law of motion. Either you use m into a or you use rate of change of momentum concept. So see that mass is 1 kilogram. Initially, I'm sorry I skipped question number 15 and I realized that the statements are different for question. So sorry for that. So let us come to the solution of 16th part. I have left this question because it was very simple. So you have to put the values and calculate it yourself. So all these values are given to you. First thing you have to write in case of numericals is you have to write all the data given to you. I have told you couple of times this too. Next, now come to question number 15 that I have skipped by chance. An object of mass 1 kilogram is travelling in a straight line with a velocity 10 meter per second, collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram. अब एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का मूव कर रहा था. ऑलरेडी उसकी स्पीड थी कुछ, मतलब u थी उसकी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो कोलाइड करता है और स्टिक कर जाता है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को. 5 किलोग्राम उसका मास है. देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर. अब वो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक पे जब जाके स्टिक कर गया तो इट डिडंट हैपन कि both are coming to rest. No, the velocity of object was so high that it made the wooden block to move together. So then what happens? They both move off together in the same straight line. So motion is going, motion is there. Calculate the momentum, the total momentum just before the impact and just after the impact. Means we have to calculate initial and final momentum. Impact means collision से पहले या बाद का momentum you have to calculate, and calculate the velocity of combined object. So come to the solution part. Mass is 1 kilogram with velocity 10 meter per second, already in motion. Next is
block is there, and this mass gets sticks to this block, and block was initially at rest. Collision हुआ, this object sticks to it, and they both move off together in the same direction. So before collision, mass m1 and m2 are used. Why? Because initial momentum and final momentum has to be calculated. So u1 for this object and u2, which is 0 for block. So these are calculated, 1 into 10 and 5 into 0. So total initial momentum will be 10 kilogram meter per second. Now final momentum we have to calculate, and for final momentum we have this system of objects which are stick together. So masses are combined, and since they are moving with same common velocity, so v1 and v2 concept is not to be used, only v is used. So this is the common velocity. So by using initial and final momentum are conserved using law of conservation, we equate this 10 kilogram with m1 plus m2 into v. This is equated. Put the values of m1 into m2. m1 equals to 5, m2 equals m1 equals to 1, m2 equals to 5. तो आगे क्या होगा आपका ये 10 equals to 6 into v, v equals to 10 by 6 meter per second. तो ये आपकी velocity आ गई आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर कोलिजन. एंड फाइनल मोमेंटम के लिए हम इसी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, विच इज़ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. यू नोट दैट पी आई वॉज ऑल्सो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो दोनों ही जो है आपके मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड. 17th question you can skip. Now come to 18 question. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kilogram transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Now it is the falling concept and height is given to you, so obviously we are going to use equation of motion for its solution. Take its downward acceleration to be 10 meter per second. So what we have to calculate? We have to calculate how much momentum will transfer, change कितना हो रहा है momentum. तो क्या लिया हमने, ये डंबल लिया 10 किलोग्राम का है, और इसको ऊपर हाइट से हमने नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया. नाउ इट वाज इनिशियली प्लेस्ड एट रेस्ट एट द टॉप, सो u इज़ टू बी टेकन एज 0. From how much distance it has been dropped? From 80 centimeter or 80 by 100 meter. So 80 centimeter it has covered till it reaches the ground. Acceleration given to you is 10. That has to be taken as positive. Why positive? Because it is coming towards the earth. According to gravity, its sign will be, it is moving according to the earth's gravity, so its sign will be positive. Now pi is initial momentum, m into u is 0, so initial momentum becomes 0. Now let us calculate the final momentum. For final momentum we need p final equals to m into v. We require velocity final. So for final velocity we are going to use equation of motion, v square minus u square equals to 2as. All the values are provided to us, and this is how we calculate the value for final velocity. That comes out to be 4 meter per second. Now put the value of this into formula for final momentum, m into v. You will get final momentum to be 40 kilogram meter per second. So momentum transferred कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, that change you have to calculate. So for that subtract these two quantities, and this much momentum is transferred by the body. So that's it. With this we have completed this chapter 9.